Let's take you straight now to tell you about the different incidents of polarization that we're going to highlight now, because it gives you a sense that this is happening not in one place but in several others, leading to this belief that there is a pattern at play. The BJP and the VHP have been staging a protest after a temple demolition in Alwar. It's one of the hottest stories today, if I could use that word. Bulldozers are to raise properties in Delhi's famous Shaheen Bagh, which was an epicenter of the anti-CAA protests. Bulldozers are likely to roll in that area. The government has asked a school, meanwhile in Karnataka, to explain its mandate, asking parents not to have a problem with compulsory Bibles being carried to school. Meanwhile, there is a call to boycott gold from Muslim shops in Karnataka. Remember, Karnataka goes to the elections early next year. The BJP, meanwhile, wants bulldozers to run in Andhra Pradesh's Nellore district as well, where there has been a face-off. And let's not forget that one of the most or loudest polarizing stories at this time, still simmering, is the whole Azan versus Hanuman Chalisa polarization that's taking place in Maharashtra. Let me take you to the big polarization story, number one of the day. And we're talking about a demolition that took place in Alwar, triggering these kinds of protests by the BJP and the VHP. Scary scenes coming in from Alwar in reaction to what they say is an injury to Hindu sentiments. The Congress government in Rajasthan says it's the BJP's own civic body that's responsible. Whatever be the case, the temperatures are up, emotions are spiraling, and this becomes polarization story number one. Take a look. Fire and fury at a BJP-VHP Aakrosh rally. This March in Rajasthan's Alwar. ये देखो सराय में जो मंदिर है शिव जी का वो कैसे धराशायी ये देखो. Against the demolition of a 300-year-old Shiva temple bulldozed to the ground in the name of development. Images of the demolition had gone massively viral earlier, showing bulldozers in action and drilling near the shivling during an anti-encroachment drive. And the blowback of the Alwar demolition is quaking the Gehlot government. Anger spilt out onto the streets as the opposition BJP and the Vishwa Hindu Parishad staged this massive protest, accusing the Gehlot government of taking revenge against Hindus for the Jahangirpuri demolition in Delhi a few days ago. Protesters tried to break barricades and had a face-off with the police. बिना किसी की सुने हुए वहाँ के विधायक महोदय की अनुशंसा पर उनकी उपस्थिति में और उनके द्वारा किए गए अधिकारियों ने भी यही कहा कि साहब हम तो सरकार का कहना मान रहे हैं, हम तो सरकार के आदेश की पालना कर रहे हैं. विधायक के कहने पर ये सब चीज तोड़े जा रही है, तो विधायक के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? हम लोग प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे आस्था का जो सवाल है उसका मान रखते हुए जो भी इसमें जो भी कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यकर्ता ने जो गलत ऑर्डर दिए हैं उन सबको सस्पेंड किया जाए. The protesters called for the resignation of Chief Minister Gehlot for targeting of Hindus through an act of vengeance. They demanded the rebuilding of the demolished ancient temple at this very same site and an apology to Hindus for the demolition. Alwar MP Balaknath and many other Saffron monks participated in this protest. सरकार से तुष्टीकरण की राजनीति ये राजस्थान सरकार लगातार कर रही है. हिंदू समाज इसको बिल्कुल सहन नहीं करेगा. सरकार अपनी हरकतों से बाज आए. जो हमारी मांगे पूर्व में थी कि जो भी अधिकारी हैं उनको सख्त सजा दी जाए, मंदिर का पुनर्निर्माण करा जाए. There was no actually resolution to demolish the mandir. There was only a talk about making the Govt path and developing the Govt path, and even that had been amended from 60 feet to 30 feet. There was no reason for which this action should have been taken in the manner it was taken. इसी सरकार का काम क्या है? उस सरकार का काम है कि धर्मनिरपेक्ष रहना चाहिए और सभी के लोगों का सम्मान करना चाहिए. अब अगर राजस्थान की सरकार में मंदिर टूट जाए तो किसकी जिम्मेदारी होगी? खुद सरकार की होगी. The Congress, however, maintains that the local administration is under the BJP and it is the Saffron party which not only bulldozed the temple. कोई मंदिर नहीं टूटा, बीजेपी ने मंदिर तोड़ा है और बीजेपी के आदमी को मंदिर को बेच रहे हैं. अभी गंगा बाग में
बीजेपी का नेता है और जो पुजारी है वो उस गंगा माँ को सालों के बीच खाया और बीजेपी का नेता ने तबेला के पास से 16 बीघा जमीन पर मैरिज होम बना रखा है जो कि मंदिर माफी की जमीन। Will the Saffron blowback impact Chief Minister Ashok Gehlot's government in the upcoming elections? With Devankur Vadhavan in Alwar, Bureau Report, India Today. And barely a week after bulldozers rolled in Delhi's Jahangir Puri, other hotspots of the city, especially sites that became protest sites for the anti-CAA fury, are likely to be targeted. We understand now that there has been a call for bulldozers to raze to the ground illegal encroachments in Delhi's areas of Shaheen Bagh, Sarita Vihar, as well as certain other areas. Hello? The Delhi South Municipal Corporation mayor has called for a crackdown on what he says are Rohingya and Bangladeshi encroachments in that area, claiming that several government areas, especially in Shaheen Bagh, you know what that's famous for, are being illegally occupied. The mayor also said that encroachers have been living illegally for decades in Delhi's Kalindi Kunj and Sarita Vihar areas. Remember, Shaheen Bagh became the epicenter of the anti-CAA protests just over 2 years ago. A fresh anti-encroachment inspection drive was carried out today by the South Delhi Municipal Corporation in 3 wards of the national capital. The demolition will be carried out after due inspection. The South MCD mayor has revealed, he said, or claims to India Today, that the anti-encroachment drive might be carried out by today itself. So things are tense. A political showdown has already exploded as the mayor hits out at the ruling Aam Aadmi Party government and the Congress for giving entry to infiltrators in the national capital. The Aam Aadmi Party has staged a huge protest outside the Delhi BJP office against this intended demolition. हमारे पिछले 5 साल से जो इस टेन्यूर के लोग थे लगातार वार्डों में सर्वे कर रहे हैं। मैं तीसरी बार इस वार्ड में आया हूं जहां निगम पार्षद ने जब बोला हम वहां पर जाकर किया है और इस बार निगम पार्षद जी को महसूस यहां पे बार कंप्लेंट आ रही थी। उन्होंने बोला इस बार हमें इधर जाना है तो हमने इधर आके अच्छा, ये जो इधर का इलाका है, ये जो इधर इलाका बना हुआ है, ये भी ओ जोन में आता है। तो क्या पूरा ओ जोन पर चलाएंगे या आप कह रहे हैं क्या कि जो इधर बन रहा है इधर चलाएंगे, इधर नहीं चलाएंगे? जो कुछ जिम्मेदारी राज्य सरकार की भी बनती है, जो राज्य सरकार उसमें हस्तक्षेप। लेकिन डेमोलिशन का काम तो आपका एमसीडी का काम है, कौन चलाएगा? हमने राज्य सरकार को जितने बार भी कोई परमिशन मांगी, कोई फाइल भेजी है, तो आज तक ना वो फाइल लोड कराई है, ना उस पर कोई सजेशन आया, ना वो रिटर्न आई, ना उसका कोई जवाब। मैं पूछ रहा हूँ कि पूरे पे चलेगा या आप देख करके चलाएंगे? जहाँ अतिक्रमण होगा और जहाँ पर बांग्लादेश या रोहिंग्यों को बसाने का काम किया गया है, जहाँ पर अवैध अतिक्रमण अवैध निर्माण किया गया, वहाँ पर हम पूरी तरह से बुलडोजर। अगर बांग्लादेशी और रोहिंग्यों के खिलाफ अतिक्रमण किसी ने किया, उस पर चलाएंगे नहीं चलाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे, चलाएंगे। यानी पूरी कॉलोनी टूटेगी, पूरा जो ओजोन पे है पूरा टूटेगा। जो लोग इसमें कुछ लोग कोर्ट गए हैं, अगर जिनको कोर्ट का संरक्षण है, कोर्ट का स्टे, उस पर हम कार्रवाई जो कोर्ट का माध्यम से करेंगे। बाकी जगह हम पूरी तरह से कार्रवाई करेंगे। कब तक होगी कार्रवाई? आज भी हो सकती है। आज भी हो सकती है। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए मुझसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जलालुद्दीन जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या काम है आपका? ट्रांसपोर्ट का। तो ये ट्रकें वगैरह सब आपकी? जी। तो ये एमसीडी के ड्राइव के बारे में पता है आपको? नहीं, उसकी कोई जानकारी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम फयाज। फयाज जी, आपको पता है सरता विहार, मदनपुर, खादर जो ये वार्ड है जैतपुर, यहाँ पर एमसीडी की टीम जाएगी, लेकिन अभी कोई डिमोलिशन नहीं है। जो अतिक्रमण है उसके बारे में रिपोर्ट बनाना। नहीं बॉस, हमें ऐसा कुछ पता नहीं। आपको लगता है कि इस इलाके में अतिक्रमण है? नहीं बॉस, अभी नहीं। आपको नहीं? नहीं अभी नहीं। लेकिन जैसे आप जहाँ बैठे हैं ये एरिया? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा हमें। कब से हैं आप यहाँ पे? हमें तो 15 साल की उम्र से हम तो 15 साल से। आप देखिए कुछ लोग और यहाँ पर हैं, जहाँ पर आप बैठे हैं यहाँ पर आप कब से अपना काम कर रहे हैं बैठ के? 20 साल से। 20 साल से। कभी कोई एमसीडी की टीम या कोई और कभी अथॉरिटी आई? क्या कहते हैं? वो हटवाते हैं गाड़ी, हम हटा लेते हैं। हमारा तो गाड़ियों का काम, हम चाबी मारे हटा देते, हमारा कोई नहीं, कोई परमानेंट हमारा कब्जा नहीं है। वो आते हैं, चाबी मारते हैं, हम चले जाते हैं। कभी जुर्माना वगैरह भी लगाया हो? जुर्माना भी लगाया जी।
भाजपा के लोगों को सबसे पहले आज भलसवा में जा करके और सर्वे करना चाहिए कि आखिर 15 साल में उन्होंने क्या किया था कि जो आज दिल्ली के लोगों को इस तरह से आग से जूझना पड़ रहा है। बुलडोजर चलाए होते 15 साल तो ये पहाड़ नहीं खड़ा होता।